the current pandemic situation of COVID-19, I thought I will teach some pre-2 lectures in class 9 math. And uh, first I'm introducing myself. I'm Pritam Majumdar, a research scholar. Uh, so I will try to give this lecture on English as well as Hindi, so that people get in both the language. And before that, I want to say one thing. I'm a Bengali people, so there may be some pronunciation problems regarding Hindi, English. So let's just consider that things. So let's start. The first chapter of class 9 is number system, and this number system means a lot of numbers we are handled in daily life. Suppose a 0, 1, 2, minus 0, minus 4, minus 5, minus infinite, point, decimal, everything. So how we can deal with these things? So on that respects, I can say number system, or that means we can divide the number in some category. The first one is natural number. Natural number means, that means if we start from 1, 2, 3, 4, dot dot dot, if we infinite, means all these numbers beginning from 0 to infinite, beginning from 1 to infinite, all these numbers are known as the natural number. Now next number is called is whole number. What does whole number? Along with natural number, if we include 0, then the total number is known as whole number. That is 0, 1, 2, 3, dot dot dot, infinite. So now what is the difference between natural numbers and the whole number? In natural number, we start from 1 and ends up to infinite. In case of whole number, it start from 0 and ends at the infinite. So now another number is comes that is known as the integer. What is integer? So when we deal with various kind of numbers, then there is some minus terms also come. Suppose minus 6, minus 5, minus 4, 0, dot 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 0, then 4, 5, 6, dot dot dot, infinite. So that is minus infinite to plus infinite, then the whole series is known as integer. Now there is another term comes that is known as now another question is arises, that is if this some fraction is there, suppose in between 0 and 1, uh, 0 and 1, there is also some number, suppose half, 1 by 4, 1 by 8. So all these numbers are also included in between this. So how we can define, that means give positions in where, that is in whole number, natural number, integers, in where we put all these numbers. So for that there is another term is come, this is known as rational number. Another term, this is known as rational number. What does rational number defines? So rational number defines that is a number which I can represent in the form of p by q. So this q, and where what is p and q? P and q any integer, and where q not equal to 0. Under such circumstances, we call this number a rational number. For example, I can say that is half, 1 by 4, even 5 also, because I can write 5 as 5 by 1. So that is also equivalent to 5. So all these numbers I can say as rational number. Now there is some other numbers also. This is known as irrational number. What is irrational number? That means a number where I cannot express this in the form of p by q. That is not possible. Then this number is known as irrational number. That means I can cut this one. That not possible. Such kind of numbers is known as irrational number. For example, I can say yes, root 2, root 3, root 4, not root 4, root 3, root 5, 5. So all these numbers, you cannot express all these numbers in the form of p by q. That's why I call this is all these numbers as a irrational number. So I will explain all of them in separately in details. So this is the whole story. Now if I represent all this in the form of a
in the form of a number line. What does number line? Number line means all these numbers I am representing in a, suppose I am representing this one. So I started from this is 1, this is 2, this is 3, dot dot dot, this is infinite. So this thing is known as what? This is natural number. When I included 0, then this become whole number. Now when I minus 1, minus 2, minus 3, minus 4, so all these terms is known as integer. And when I included that means rational and irrational number also in this part, suppose this is half, this is 1 by 4, then whole series is, and including that here I can put, suppose this is root 2, this is root 3, then whole the thing is known as real number. So we'll go through details about all these things. So the basic parts start from these things. This is about a general scenario regarding the number system. Now starts with number exercise. What is the first exercise of number system? Okay, the first exercise 1.1. हाँ, मैं भूल ही गया, मैं तो हिंदी में बात नहीं कर रहा हूँ. तो मैंने जो बताया ये सीरीज में जो नंबर सिस्टम है उसका हम लोगों ने कुछ पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं. जैसे कि नेचुरल नंबर. तो नेचुरल नंबर मतलब जब 1 से स्टार्ट होकर ये नंबर इन्फिनिट तक कंटिन्यू होते हैं, तो ऑल दिस नंबर्स आर नोन एज, तो ये सारे नंबर को हम लोग बोलते हैं नेचुरल नंबर. सेकेंड थिंग इज होल नंबर. होल नंबर मीन्स जिस आप नेचुरल नंबर के साथ 0 को जोड़ दीजिए तो उसका हम बोलेंगे होल नंबर. एंड व्हाट इज देयर इज अनदर टर्म इज इंटीजर. व्हेन अब हम लोग जब नेगेटिव टर्म को भी लेंगे, 0 को भी लेंगे या पॉजिटिव टर्म को भी लेंगे, दैट मीन्स इन अ सिंगल सेंटेंस आई कैन से माइनस इन्फिनिट से स्टार्ट होकर जब प्लस इन्फिनिट में जाके कोई नंबर सीरीज खत्म होते हैं तो उसका हम बोलते हैं इंटीजर. अलॉन्ग दैट देयर इज अदर नंबर्स. वहाँ पे और भी कुछ तरीके से नंबर है, जैसे कि रेशनल नंबर, इरेशनल नंबर. व्हाट इज रेशनल नंबर? जब कोई नंबर को हम पी बाई क्यू के रेस्पेक्ट में रिप्रेजेंट कर सकते हैं तो उसका हम बोलेंगे रेशनल नंबर. एंड व्हेयरएज क्यू शुड नॉट बी 0. क्यू कभी भी 0 नहीं हो सकता, क्योंकि 0 होगा तो उसका वैल्यू इन्फिनिट हो जाएगा. और जब ये जैसे कि रूट 2, रूट 3, ये सब नंबर ऐसे एक नंबर है जिसको हम लोग कभी भी पी बाई क्यू फॉर्म में रिप्रेजेंट नहीं कर पाते हैं, तो ये सब नंबर को हम बोलेंगे इरेशनल नंबर. सो नाउ अब हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं एक्सरसाइज 1.1. द फर्स्ट क्वेश्चन इज द 0 इज द रैशनल नंबर, कैन यू रिप्रेजेंट इज इन द फॉर्म ऑफ ईयर. तो मैं क्वेश्चन को दोबारा यहाँ पे लिख के टाइम वेस्ट करना नहीं चाह रहा हूँ, तो मैंने स्टार्ट कर रहा हूँ. तो क्या हम लोग क्या 0 को रैशनल नंबर बोल सकते हैं कि नहीं, ये है क्वेश्चन. सो कैन वी रिप्रेजेंट 0 एज अ रैशनल नंबर? सो यस, ऑफ कोर्स वी रिप्रेजेंट 0. द आंसर शुड बी yes. Why? Because I can represent 0, that is 0 by 1, that also equal to 0, 0 by 2, that also equal to 0, 0 by 3 equal to, that also equal to 0, even minus also, 0 by minus 1, that also 0. So I can represent all these things in the form of p by q. Since the definition of rational number is is that if you represent any number in the form of p by q, that is known as rational number. तो हम लोग इसको बोल सकते हैं rational number. Clear? Second question. Find 6 rational number between 3 and 4. तो हम लोग अब सेकंड क्वेश्चन की तरफ जा रहे हैं. सेकंड क्वेश्चन ये है जो 3 और 4 के बीच में अब हम लोग कैसे ये रैशनल नंबर को कितना नहीं 6 रैशनल नंबर निकालने के बोल रहे हैं. तो क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 2. रैशनल नंबर between 3 and 4. 3 और 4 के बीच में कितना रैशनल नंबर है मुझे पूछा है 6 रैशनल नंबर निकालने को बोला है. 6 नंबर. तो ये हम लोगों को निकालने को बोला है. तो हाउ आई कैन डिफाइन दिस 6 नंबर. सो यू सी दिस 3 और दिस इज 4.
So in between, that means if we represent this one in a number series, this is 3, this is 4, suppose this is 5, and this is 2. So अब मैं क्या बोल सकता हूँ, ये 3 और 4 के बीच में मुझे ये रैशनल नंबर ऐसे नंबर निकालना है जिसको हम लोग p/4 के p/q के रेस्पेक्ट में रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो इसलिए हम लोगों ने ये इसका सिंपल तरीका ये है, जैसे कि यहाँ पे कितना बोला है 6 नंबर, तो मैंने 6 + 1 से उसको ऊपर भी डिवाइड करूँगा, नीचे भी ऊपर भी मल्टीप्लिकेशन करूँगा, नीचे भी मल्टीप्लिकेशन करूँगा। दैट इज 3 आई कैन रिप्रेजेंट इज 3 × 7 is 7. Why 7? Because 7 is come 6 + 1. If they told you that to find is a 5 number, then I will put 5 + 1. But since they have given 6 number, I have to find out 6 rational number. That's why I put 7. So I started rational number equal to 6. So this I can represent in the form of like that, and this will be 21/7, and whereas this 4 I can represent as 4 × 7 divided by 7, that is 28/7. So you see, if I observe, मैंने कुछ ना लिखा है यहाँ पे, just मैंने 7/7, that is 1, 3 × 1 = 1, and 4 × 7/7, that is 4 × 1, that is also same thing. So now what I can say, now in between, now 21/7 and 28, in between there is a lots of number, जैसे कि मैंने बोल सकता हूँ जैसे कि 22/7, 23/7, 24/7, 25/7. So all these numbers are in between of this number, that is 3 and 4. तो यहाँ पे मुझे 6 बताया, तो मैंने मुझे 6 लिखना है, तो that is 26/7, 27/7. So there's a 6 numbers, so I can represent this is 6 number. अब मुझे 5 बोलता तो मैं क्या करता, यहाँ पे 5 + 1, that is 6 से डिवाइड करते ऊपर नीचे, यहाँ पे भी 6 से डिवाइड करते ऊपर नीचे. In this way I can represent any rational number in between any two numbers. So there's the thing. So this should be my answer. Okay. Now, so this is the question number 2. Now the next question. Next question is, अब एक फ्रैक्शन दिया है, फाइंड द रैशनल नंबर, 5 रैशनल नंबर बिटवीन 3/5 and 4/5. तो मुझे बताया है क्वेश्चन नंबर, दिस इज क्वेश्चन नंबर 3, 5 रैशनल नंबर between 3/5 and 4/5. तो यहाँ पे मुझे देखना है कौन सा नंबर, एक है देखना है ये 5 रैशनल नंबर इन लोगों ने मांग रहा है, कहाँ पे 3/5 और 4/5 के in between of 3/5 and 4/5. I have to find out 5 rational numbers. So what is the procedure for that? This is the similar way we done the before. That is question number 2. So what we have to do here, 3/5, as I said before, here will be 6 and here will be also 6. Now here also the term will be, so this becomes how much, 18/30, and that will be 4/5 into 6/6, that is 24/30. So now you see 18/30, 24/30, the denominator is same. Now you observe some in between of these two, there is a huge number, that is 18. So I can write 19/30, 20/30, 21/30, 22/30, 23/30. So all these 5 numbers are in the form of p/q, and they also present in between of 3/5 as well as 4/5. Okay, now that's clear. So next question is, there is some statements are there, we have to say these statements are true or false. So just represent the question number 4. Question number 4 says, क्वेश्चन नंबर 4 का जो Part-1 है वो बता रहे हैं एवरी नेचुरल नंबर इज अ होल
every natural number is a whole number or not, मतलब हर नेचुरल नंबर एक होल नंबर होते कि नहीं। अब मैंने अब नेचुरल नंबर का डेफिनेशन देखूंगा तो किससे है 1 2 3 4 डॉट 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 इनफाइनाइट तक। और होल नंबर का क्या है 0 1 2 3 4 डॉट 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 इनफाइनाइट। तो अब ये है नेचुरल नंबर, दिस इज कमिंग अंडर द नेचुरल नंबर। and this is coming under whole number। अब मेरा क्वेश्चन पूछ रहे हैं ये जो नेचुरल नंबर है ये होल नंबर है कि नहीं है। तब obviously this all the natural numbers are in between of this whole number series, so I can say yes, the statement is true। That's why I'm writing the statement is true, because these natural numbers are coming in between of these two, that is true। Okay, now second statement, I hope all of you have the books which are along with you। तो मुझे ये क्वेश्चन लिख के दोबारा ये क्वेश्चन का टाइम वेस्ट करना नहीं चाह रहा हूँ, इसलिए मैंने सीधा सीधा आंसर पे ध्यान दे रहा हूँ। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है ये है एवरी इंटीजर इज अ होल नंबर, और नेक्स्ट जो पार्ट है ये है एवरी इंटीजर इज अ होल नंबर और नॉट। सो अब इंटीजर का डेफिनेशन में दूंगा तो ये हो गया इंटीजर माइनस इनफाइनाइट, सपोज -5 -4 डॉट 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 0, यहाँ पे 1 2 डॉट 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 इनफाइनाइट। और ये है इंटीजर और व्हाट इज होल नंबर, एंड दिस ओनली पार्ट इज द नोन एज अ होल नंबर। दिस इज द होल नंबर। सो यहाँ पे ऑब्वियसली बात है जब मैंने ये तरफ से शिफ्ट होऊंगा तो ये इंटीजर होगा लेकिन ये होल नंबर नहीं होगा। So whatever the statement given, the whole number, every whole number, sorry, every integer is a whole number. That's a wrong thing, because every whole number is an integer, but every integer is not a whole number। Because मैं जब whole number से इस तरफ शिफ्ट होऊंगा, लेफ्ट की तरफ शिफ्ट होऊंगा, तब मैं देखूंगा यहाँ पे मुझे बहुत सारे नंबर मिल रहे हैं जो होल नंबर नहीं है, तो इसलिए मैं उसको होल नंबर नहीं बता सकता हूँ। तो दैट मीन्स द स्टेटमेंट 2 दैट इज फॉल्स। ओके, then third one, every rational number is a whole number। next question ये है every rational number is a whole number। तो ये जो ये है एवरी रैशनल नंबर इज अ होल नंबर, जिस टॉपिक में मैं जाऊँगा तो मैं देखूंगा जैसे कि होल नंबर में चाहते हैं जैसे कि 0 1 2 3 4 5, ये सब क्या है, ये सब होल नंबर है। बट इन बिटवीन ऑफ जिस नंबर रहेगा जैसे कि हाफ, तो ये एक रैशनल नंबर है बट ये होल नंबर नहीं है, क्योंकि होल नंबर पे मुझे क्या होना चाहिए, फ्रैक्शन नहीं होना चाहिए। बट होल नंबर पे व्हेन आई कंसीडर अबाउट अ होल नंबर इट शुड बी 0 1 2, दैट इज अ फुल नंबर। सो सिंस इट इज कमिंग इन द फ्रैक्शन, सो आई कैन से दिस इज अ रैशनल नंबर, दिस इज नॉट अ होल नंबर। सो आई कैन कंक्लूड माय स्टेटमेंट दैट एवरी रैशनल नंबर इज नॉट अ होल नंबर, सम ऑफ देम आर होल नंबर but every whole number is a rational number। So that's the thing। So whatever the statement is true, that is also a false statement। So this ends the chapter exercise 1.1, and I can start with, next I will shift to exercise 2.1.2। now we shift to exercise 1.2। अब यहाँ पे क्या आ रहा है, यहाँ पर रिलेशन बिटवीन रेशनल नंबर और इरेशनल नंबर आ रहा है। तो इसका जो फर्स्ट क्वेश्चन है इस पर कुछ स्टेटमेंट दिया है, उसका स्टेटमेंट गलत है या सही है वो पूछ रहे हैं। दैट मीन्स दे आर आस्किंग अबाउट दिस स्टेटमेंट्स ट्रू और फॉल्स। द फर्स्ट स्टेटमेंट इज एवरी रैशनल नंबर इज अ रियल नंबर, सॉरी इरेशनल नंबर, एवरी इरेशनल नंबर इज अ real number। so what I can say, so real number, what is real number, what real number is 0 1 2, this is 3, this is -1, this is -2, this is -3। so now and in between this is if it is come half, if it is √2 √3, so this is √2, this is √3, so all these numbers are known as real number।
So now they are asking about all these irrotational numbers are real number. Yes, of course, they must are coming in the real number series, real number line. So I can say all these irrotational numbers are real number. For example, I can say root 2. It's also comes in the real number series. Is root 3 is also coming in the real number series. Pi 7, 22 by 7 is around 3 point something, 3.14. So this will become here also. So all these numbers are real number. Now, so what is the statement is given? This is true. The answer should be true. Okay. Now I'm shifting to this pattern. The second is point. Every point on the number line in the form of a root m, uh, where root m is a natural number. Every point in the number line. Okay. Second question, they are asking every number on the series which is in the form of root, that is root m, where m may be any integer. That means plus, minus, these are the real number. They are asking about these things. So suppose I consider that is root 4. Of course, this is equal to 2. That will become a real number. Root 3. This is also coming in this series. So as I shown before, so this is also a real number. But if I take something minus, that means minus root 3. So it comes some imaginary part. So that should be come in the later on part. So for that situation, I cannot say that this is not possible now, because we have not got any idea regarding imaginary number yet. So that's why I can say this is not possible that every root m number that should be a real number. So that's why I can say this is a false statement. Because if it is a positive, then it's okay. But if I take any negative root, then it is never possible. So it never becomes in the under the real number. Next, third statement: every real number is a irrotational number. That's also a false statement. Every irrotational number is a every real number is a, they are saying about every real number is a irrotational number. Number. So that's a false statement, because I have already shown you that real numbers start from minus infinite and it ends with plus infinite. In between it may become root, half, whatever, fraction, point, whole, everything there can possible. So they are saying that every real number is irrotational, but for irrotational numbers I cannot represent this in the form of p by q. That is never possible. So in among the real numbers, some of them parts are possible. So suppose root 2, they I cannot represent root 2, root 3 in the form of p by q. So that's why I can say these numbers are the irrational number. But suppose I can take in 1, so 1 I can represent 1 by 1. So this is a, I can represent this in the form of p by q. So this is a real number. मतलब ये है, यहाँ से सिर्फ root 2, root 3, root 5 such kind of numbers are they are real number as well as they are irrotational number. But when I consider 1, 2, 3, 4 such numbers, so these are the real number, but they are also rational number. So whatever the statement given, every real number is a irrotational number, that's a false statement. So this is should be the answer. Okay, now I am going to the question number 2. The question number 2 states, are the square roots of all the positive integers are irrotational? That's a wrong statement. They are asking all square roots of any number. Suppose square root of 3, square root of 4, square root of
So the second question is the square root of all these numbers or positive integers are be irrotational number. So suppose root 4, root 5, root 6, root 7, all these numbers I am writing. So now here I observe, so yes, root 3 is a irrotational number because I cannot represent irrotational number because I cannot represent this is in the form by p by q. That is never possible. So I can say this is a irrotational number. But if we see जैसे कि root 4 this is equal to 2. 2 I can write this is in 2 by 1. So these are in the form of p by q. That is possible. So this is a irrotational number. Sorry, this is a rotational number. So whatever the statement given, that's all the square root of all this positive integer should be irrotational number. That's a false statement. So I can say this is a false statement. So what should be the answer? This is false. For example, I can say root 4, root 9, root 16, root 25, root over 125, all these things. Now, next question is how I can represent root 5 in the number line. This is a very important question. This question frequently asked in the exam. How to represent root 5 on number line. हाँ, हम लोगों को पता है यहाँ पे एक नंबर लाइन है, लेकिन ये नंबर लाइन पे रूट 5 कहाँ होगा? जैसे कि मैंने बताया 0 यहाँ पे है, 1 यहाँ पे होगा, 2 यहाँ पे होगा, 3 यहाँ पे होगा. हाफ होता तो इसको मैंने डिवाइड कर देता आधा आधा पार्ट में, तो यहाँ पे हाफ हो जाता. अब मैं रूट 5 को कहाँ पे दूँ? तो इसका कुछ मेथड है, ग्राफिकली हम लोग इसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं. तो फॉर दैट द फर्स्ट इज मुझे यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, एक ऐसे करके एक स्क्वायर ड्रॉ करना पड़ेगा. तो ये स्क्वायर का जो ये साइड है दिस इक्वल टू 1 एंड दिस साइड ऑल्सो दिस इज 1. अच्छा, नाउ मैंने एक हाइपोटेनियस ड्रॉ किया यहाँ पे. हाइपोटेनियस मैंने यहाँ पे ऐसे ड्रॉ किया, और ये तो राइट एंगल ट्राइंगल है. अब राइट एंगल ट्राइंगल का ये हाइपोटेनियस जो होगा वो क्या होगा? दिस हाइपोटेनियस इक्वल टू बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर. That is 1 square plus 1 square, that is 2. So the hypotenuse. अब मैं इसको थोड़ा इलेबोरेट कर रहा हूँ यहाँ पे. इसको मैं यहाँ में रिमूव करके ये चीज़ को यहाँ पे लेके आ रहा हूँ. ये पार्ट को यहाँ पे लेके आ रहा हूँ. सपोज यहाँ पे एक राइट एंगल ट्राइंगल है. अब इसको मैंने बी पकड़ा, यहाँ पे मैंने इसको परपेंडिकुलर पकड़ा, यहाँ पे एज पकड़ा. तो अकॉर्डिंग टू Pythagoras formula we know that h square equal to b square, that is base square plus perpendicular square. मतलब base square plus hypotenuse square equal to base square plus perpendicular square. तो यहाँ से आ जाता है मेरा hypotenuse equal to क्या आते हैं, root over of b square plus p square. तो यहाँ पे बेस कितना है मेरा, बेस इक्वल टू 1, परपेंडिकुलर कितना है, दैट इज ऑल्सो 1. सो यहाँ से हाइपोटेन्यूज मेरा कितना आएगा, रूट 2. तो मैंने ये जो साइड ड्रॉ किया तो इससे ये क्या आ जाता है, ये किसका वैल्यू रिप्रेजेंट कर रहा है, ये एक्चुअली रूट 2 का वैल्यू को रिप्रेजेंट कर रहा है. अब कभी कभी ये क्वेश्चन भी आ जाते हैं एग्जाम में, मतलब तुम कैसे रिप्रेजेंट करोगे रूट 2 का, हाउ यू रिप्रेजेंट रूट 2 इन द नंबर लाइन. तो मुझे क्या करना पड़ेगा अंडर सच सिचुएशन, मुझे ये जैसे कि ये लाइन को ड्रॉ के मुझे एक आर्क ड्रॉ करना है, और ये आर्क यहाँ पे कोई पॉइंट में जाके उसको डिवाइड करेगा, और ये जगह हो जाएगा मेरा रूट 2. सो इज इट क्लियर? सो इन दिस वे आई कैन रिप्रेजेंट दैट दिस इज अ रूट 2 वैल्यू. अब ऐसे करके मुझे कभी कभी रूट 3 भी पूछ लेते हैं. तो रूट 3 कैसे होगा, ऑन दिस सिचुएशन मुझे क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे और एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करना पड़ेगा, और ये परपेंडिकुलर कितना होगा उसका वैल्यू भी 1 होना चाहिए, और यूनिट कुछ भी हो सकते हैं. अब ये सिचुएशन में आप देखिए, अब मैंने जब इसका भी हाइपोटेन्यूज ड्रॉ करूँगा वो भी कैसे होगा, ये हाइपोटेन्यूज भी कैसे होगा, यह हाइपोटेन्यूज होगा. अब यह हाइपोटेन्यूज का वैल्यू क्या हो जाएगा, अब मैंने सेम वे उसको फिर रिप्रेजेंट किया तो ये क्या आ जाएगा, दिस विल बी
base square per perpendicular, that is root over of root 2 square plus 1 square, that is 2 plus 1, that is root 3. तो ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? ये root 3 को रिप्रेजेंट कर रहा है. दैट मीन्स दिस ये जो मैंने ड्रॉ किया इसका वैल्यू कितना आएगा? root 3. तो सिमिलरली यहाँ पे मैंने एक आर्क ड्रॉ किया, तो ये यहाँ कोई जगह में जाकर एक्सेप्ट करेगा, इंटरसेक्ट करेगा, जिसका वैल्यू कितना आएगा? root 3. अब सिमिलर वे अब मैंने जब यहाँ पे और एक ड्रॉ करूँगा परपेंडिकुलर, उससे आ जाएगा मेरे क्या? root 4, सॉरी यहाँ पे मैंने और एक परपेंडिकुलर ड्रॉ किया, यहाँ पे इसका वैल्यू भी 1 है, और इस जगह में जो हाइपोटेन्यूस आएगा वो किसको रिप्रेजेंट करेगा? ये root 4 को रिप्रेजेंट करता है, दैट इज 2. तो ये जाकर बिल्कुल 2 में जाके इंटरसेक्ट करेगा. एंड जब यहाँ पे मैंने और एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करूँगा, तो यहाँ पे ये हो जाएगा, और इसका भी कितना होना चाहिए? 1 यूनिट होना चाहिए. और ये जगह में जो हाइपोटेन्यूस हो जाएगा वो कितना हो जाएगा? ये वाला. अब ये root 4 है, ये 1 है, तो ये अल्टीमेटली ये कितना हो जाएगा? root 5. अब मैंने सिमिलर वे जब मैंने एक ऐसे ड्रॉ करूँगा, ये जाके जस्ट बिल्कुल 2 की क्रॉस करके जाके ये जगह में रिप्रेजेंट करेगा, तो ये पॉइंट हो जाएगा मेरा root 5. So this is a simple method. So in this way they may ask you anything. That means the root 2 भी पूछ सकते, root 3 भी पूछ सकते, root 5 भी पूछ सकते. आपको क्वेश्चन समझ के उसकी तरफ से आंसर को ड्रॉ करके उसको रिप्रेजेंट करना है. इसका और एक मेथड भी है, सेकंड मेथड जो इस टाइप का है, उसको डायरेक्ट मेथड भी आप कर सकते हैं. जैसे कि root 5 बताया, तो अब मैं उसको ऐसे कर सकता हूँ. जैसे ये नंबर सीरीज़ है, नंबर सीरीज़ में मैंने यहाँ पे 0 है, यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 2 है. अब जब ये 1 2 और यहाँ जैसे कि यहाँ पे 3 है, अब मैंने पहले हम लोगों ने क्या लिया? 1 स्क्वायर ड्रॉ किया था. अब ये केस में हम लोग क्या करें? 1 स्क्वायर ड्रॉ ना करके हम लोग क्या करेंगे? यहाँ पे root 2 तक ले जाएंगे, और यहाँ पे कितना लेंगे? यहाँ पे 1 यूनिट लेंगे. अब देखिए, अब जब मैंने यहाँ पे हाइपोटेन्यूस ड्रॉ करूँगा, तो ये हाइपोटेन्यूस किस टाइप का होगा? यहाँ पे जो हाइपोटेन्यूस आएगा, ये हाइपोटेन्यूस इस टाइप का आएगा. कि इसका वैल्यू कैसे आएगा? हाउ मच दिस डिस्टेंस? दिस इज दिस इज 2, this is 2 and this is 1. So what should be this value of this one? This is root over of 2 square plus 1 square, that is root 5. तो ऐसे डायरेक्ट मेथड से भी हम लोग कर सकते हैं. अब ये इस डायरेक्शन में क्या होगा? अब यहाँ से आपको एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करना पड़ेगा, जो जाके यहाँ पे कोई जगह में जाके इंटरसेक्ट करेगा, और यही हो जाएगा आपका root 5 का वैल्यू. So in this manner I can represent root 5 any number, whatever they can. We have to match with these things, and then we can represent these numbers in this way. Okay. So next, so I'm not doing this one. This is given some class activities. Class activities, it means in this what I shown you before, how to represent root 5. So in this manner I can represent any root, that is root n. I can represent root n also. So this method is known as so in this way I can represent any number that which has been given in your class activity. So there's the finish with exercise 1.2. so we'll shift to the 1.3 next.